Input devices, scanning devices, scanner. A scanner is essentially an input contraption invented to take picture of source like poster, printed image, document like magazine page, notice, or any other material produced on paper. These can be produced to display the relevant information within second to another address or display point. स्कैनर क्या कहता है, आप कोई भी इनपुट लेता है, जैसे बार कोड हो, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट पे कोई इमेज हो जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई हो, उसको स्कैन करता है और जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है कोई भी, या डिस्प्ले पॉइंट होता है, या उस जो डिवाइस के साथ अटैच डिवाइस होती है उस पर इंफॉर्मेशन को शो कर देता है कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, किस तरह की है. Optical scanner capture data using a beam of light. A light beam pass over an object and the image is analyzed by specialized software. Optical mark reader या recognition. OMR detect marks made on a piece of paper using ink or soft pencil by passing an infrared beam over them. The computer then interrupt the data input. ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है कि किसी पेपर पे इंक के ज़रिए जो लिखा हो या लाइंस हो, तो वो बीम क्या करती है, इंफ्रारेड रेड मतलब उसके ऊपर डालती है, जो उसको उस डाटा की इनपुट को इंटरप्ट करता है. सम यूजेस ऑफ एमआर: रीडिंग ऑर्डर फॉर्म्स, रीडिंग टाइम शीट्स, मार्किंग मल्टीपल चॉइस, रीडिंग इलेक्ट्रिकल मीटर्स. ऑप्टिकल बार रीडर OBR used to capture data recorded in lines of varying thickness known as a barcode or universal product code. Barcode hold manufacturer detail and the product code but not price detail because price vary from one place to another. ऑप्टिकल बार रीडर क्या कहता है, लाइन की थिकनेस को एज अ इनपुट लेता है उनको और उनकी डिटेल को शो कर देता है, प्रोडक्ट का कोड बताता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग बताता है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR. An OCR scanner is used to read typewritten, computer printed, or handwritten characters and transforms the image into a soft copy that can be manipulated using a word processor. Today, a more advanced OCR scanner called a flatbed scanner is used to capture picture and real object. OCR स्कैनर क्या करता है, टाइप रिटन और कंप्यूटर जो प्रिंटेड करेक्टर्स होते हैं या हैंड रिटन करेक्टर्स होते हैं या इमेज होती है, उनको सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफ़र कर देता है. Magnetic ink character reader MICR uses the principle of magnetism to convey its data input. The document characters are typed or printed using ink with particles of iron oxide that give the magnetic property. After forming the characters on the document, the magnetic ink encoded characters are magnetized by passing the document through a strong magnetic field. MICR यूज़ किया जाता है मैग्नेटिज्म के लिए. जो डाटा इनपुट किया जाता है वो एक आयरन ऑक्साइड इंक होती है जो उन पार्टिकल्स को डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर देती है. Magnetic strip reader MSR. A magnetic strip is a layer of magnetic material on the surface of a plastic card. The magnetic strip is read using magnetic strip reader. Some uses of MSR: reading plastic card in bank, reading telephone calling card. Smart card. A smart card is a physical card that has embedded integrated chip that acts as a security token. Smart cards are used for a variety of applications but are most commonly used as credit card and other payment card. Smart card microprocessors or memory chips exchange data with card reader and other system over a serial interface. स्मार्ट कार्ड हमारे पास एक फ़िज़िकल कार्ड होता है, इसके ऊपर या तो चिप होती है
यानी कि मेमोरी चिप होती है जो डाटा को एक्सचेंज करती है, या फिर बारकोड रीडर लगा होता है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है या फिर पेमेंट कार्ड हो सकता है। ऑडियो डिवाइसेस, माइक्रोफोन, सीडी, डीवीडी प्लेयर। Microphone and CD DVD player is widely used audio data into computer memory. Here, microphone capture the sound vibrations from source and convert into corresponding digital signal and transfer to computer memory for further processing. Whereas through CD DVD player, we can enter pre-recorded audio signal into computer memory. ऑडियो डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी या माइक्रोफ़ोन प्लेयर के ज़रिए। ये क्या करते हैं कि साउंड को कैप्चर करते हैं, वाइब्रेशंस, और इनको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, जो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी को, और उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। वीडियो डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कैप्चर वीडियो फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इनटू कंप्यूटर। Video means moving images along with sound. Digital video camera is the device that is used to capture the movement of picture with sound around the world and environment and send into the computer memory. Second है webcam. Webcam is an other important input device that capture the movement of the object in the surrounded area and transfer into the computer memory. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।